मेटल्स का सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सेकंड है uses of metal and alloy and their properties। ये आपके पास properties of metal, uses of metal, alloy and their properties। Number 3, reactivity series, reactivity series, then corrosion of metals, and then last one is extraction of metal। दिस इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो भाई ये 6 चीजें हैं जो आपके कोर्स के अंदर हैं। आयरन की एक्सट्रैक्शन है और एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन आपके कोर्स का हिस्सा है। चलिए पहली चीज से स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है जी, पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपेयर द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। बताइए इस हिसाब से चले या इंपॉर्टेंस के हवाले से चलें? एक्सट्रैक्शन से पहले स्टार्ट करें, समझ नहीं आएगा पहले से ही चलते हैं, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग थर्मल कंडक्टिविटी, electrical conductivity and etc. And then describe the general chemical properties of metal limited to their reaction with dilute acid, cold water, steam and oxygen। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। So first point is general physical properties of metal and non-metal। बोले यहां तक बात समझ आ रही है हेडिंग को? यस सर। चलिए मुझे बताइए बताइए व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क होता है? Sir, there are for physical properties you could say like हाँ, sir will फिजिकल melting point come प्रॉपर्टीज। in physical property? Will melting point come in physical property? हाँ एग्जैक्टली, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। Okay, so like metal is like it has a high melting point and non-metal has a low melting point. ठीक है, देन
Also, metals are dull. No, metals are shiny, Hmm. whereas non-metals are dull. Okay, look at the difference. इधर हम लिखेंगे metals. Non-metals. The first point is of metal is metal conduct electricity. Metals are good conductor of metals are good conductor of heat and electricity. भाई metals में अच्छी कंडक्शन होती है, अच्छी हीट पास होती है. बताइए नॉन मेटल में भी ऐसा ही है? No, sir. क्या होता है बताएं नॉन मेटल्स में? They don't conduct. They are poor conductors of heat and electricity. They are poor conductor of. So non-metals are bad conductors of heat and electricity. This is point number 1. Now point number 2. Point number 2, metals are malleable. आप बता सकते हैं what is the meaning of malleable? Sir, malleable means that we can mold them into whatever shape we want. Exactly, they can be beaten into sheets, right? So metals are malleable. Metals are malleable. That is, they can be beaten into sheets. While non-metals are non-malleable. 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 भाई उनको शीट्स नहीं बना सकते मार मार के. आप देखें आयरन से आप प्लेट बना सकते, आयरन से आप डिफरेंट चीजें बना सकते बाय हैमरिंग. लेकिन आप लकड़ी को हैमरिंग करके उसकी शक्ल नहीं बना सकते. Next is metals are Shiny. sonorous. Oh. What is the meaning of sonorous? Sir, they make a sound. Yes, exactly. Make sound. When collide with other material. When iron collide with iron, sound is produced. But when wood is collide with another wood, sound is not produced. So non-metals are
non-sonorous. Just next point. Metals are ductile. Yes, what is the meaning of ductile? Sir, they can be drawn into wires. Wires, exactly. So point number 4. Point number 4. Metals are ductile. Metals are ductile. That is, they can be drawn into wires. Just point number 4 for non-metal. Non-metals are not ductile. Non-metals are non-ductile. Non-metals are non-ductile. Yes, which one has high tensile strength? Metals. 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 So non-metals have low tensile strength. What is the meaning of tensile strength? Yes. Metals have high tensile strength. बताएं what is the meaning of tensile strength? Tensile slow. strength means stability. They cannot be broken down easily. The tensile strength of wood is low. Yes, when you increase the load on the wood, wood will break. So non-metals have low tensile strength. Why low tensile strength? Because they have low attraction between molecules. Because they have low attraction between the molecules. While metals have high tensile strength because of high attraction. Because of high attraction between the molecules. बोले और कोई डिफरेंस है? Sir, metals are shiny. Metals are shiny. Very good. And you know that
metals have high melting and boiling point? Next is metals have high boiling point, high melting and boiling point. Melting and boiling point. Metals have high melting and boiling points. While non-metals, They have low melting and boiling points. yes. So non-metals have low boiling and melting and boiling point. Another difference is metals react with oxygen and form basic oxide, while non-metal, They form acidic oxides. exactly, very good. Non-metals react with oxygen and form acidic oxide. These are the differences between metals and non-metals. This is the difference between the metals and non-metals. Okay. Any question regarding metals and non-metals? Sir, what do non-metals form? Acidic oxide. Yes, metals, non-metals form acidic oxide. For example, metal is iron. Iron react with oxygen. For example, sulfur. Sulfur is not a metal. Basic oxide, sulfur is non-metal. When sulfur react with oxygen, sulfur dioxide is formed, or sulfur trioxide is formed. Here we have 2, here we have 2, here we have 3. Solid, gas, and gas. This is acidic oxide. Why acidic oxide? Because when you add water in it, it forms sulfuric acid. When you add water, it forms sulfuric acid. That's why sulfur trioxide is acidic. Now, metals. For example, sodium. Sodium react with oxygen and form sodium oxide. This is basic oxide. Why basic oxide? When you add water in it,
NaOH is formed. So write 2 here. 2 sodium, 2 hydrogen, 2 oxygen. Any question? बोले क्या चीज समझ नहीं आई ये बोले. बोले कुछ बात पूछनी है. No, sir. No, sir. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट. Now describe the general chemical properties. Next is describe the general properties. General chemical properties. Now next is general chemical properties. General chemical properties of metals. General chemical properties of metal. सिर्फ dilute acid, cold water, and steam and oxygen. So first is reaction with water. Next is reaction with water. Now reaction with water. When metal react with water to form metal oxide plus hydrogen gas. So when metal react with water, metal oxide and hydrogen gas is produced. So some metals react with cold water, some with hot water, and some react with steam. For example, sodium, potassium, lithium, when they react with oxygen, they form lithium oxide.
they form sodium oxide, basic oxide, potassium oxide. Now this equation is balanced. Sodium is metal, solid, solid, solid. Oxygen is gas, oxygen is gas, oxygen is gas. These oxides are solid. Now next is more metals. For example, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. When these metals react with oxygen, oh water. ओ भाई आप लोग सो रहे हो क्या यार? आपको Yes, मेरी sir. आवाज Yes, आ sir. रही है? Yes, sir. बेटे हम तो बात करें वाटर की, मैंने इक्वेशन लिख दी है ऑक्सीजन की, आप बोल ही नहीं रहे यार. ये वाटर है, वाटर, H2O. Sir, जी बोले. sir, so basically, the metal plus H2O, metal displaces with H2. Yeah. If you have group 1, then 2 times metal oxides is formed. You put two under the metal for group 1. मैं अभी वही करवाता हूँ, पहले इक्वेशन सही कर लूं, ठीक है? Sir, but I'm saying Oxide, like you displace, yeah, like metal plus H2O, so H2O like and metal like swap with each other to form like metal oxide and then H2, yeah. yes, metal oxide is formed. Hydrogen is replaced. Okay. These are gas. Hydrogen is gas. So hydrogen, oxygen is 1. So no need to write 2 here. So you have 2 metals. So write here 2. 2 lithium, 2 lithium, 1 oxygen, 1 oxygen, 2 hydrogen. Equation is balanced. All are liquid. So this is water, water, plus water, plus water, plus water. Form beryllium oxide. बेटे कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर. हमने जो ये लिखा है ना सब, ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड. मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा. When metal react with water, metal hydroxide and hydrogen gas is released. तो भाई ग्रुप 1 में जब डालोगे तो ये बनेगा हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड होता है OH. और ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड एक्वस होते हैं, एक्वस.
all are aqueous. आप इक्वेशन देखेंगे तो 2 यहां नहीं आएगा. Lithium is 1, lithium is 1, oxygen is 1, oxygen is 1, hydrogen is 2, but here hydrogen is 2, here hydrogen is 3. तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 लगाना पड़ेगा भाई. इनको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा इधर आपको. अब चेक करते हैं. लिथियम 2, लिथियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2, बैलेंस. बोलो भाई, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही सर. वो लिखा ही गलत, सारा गलत हो गया इसकी वजह से. अब नेक्स्ट आ जाइए. बेरिलियम ऑक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस. इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस एक आध लिख देते हैं. एक इक्वेशन और लिखते हैं ग्रुप 2 की. कैल्शियम को जब डालेंगे पानी में तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस. इसी तरह से अगर आप कुछ ऐसे मेटल ले, फॉर एग्जांपल जिंक ले लें, उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करें, लेकिन ये गैस होना चाहिए, गैस. बताएं, जब वाटर गैस होता है तो उसे क्या कहते हैं? सर वाटर वेपर. उसे स्टीम कहते हैं, स्टीम. Steam. वाटर अगर गैसियस फॉर्म में हो तो उसको स्टीम कहते हैं. ऐसी सूरत में हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, वो बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. गर्म है ना, तो गर्म होने की वजह से ये OH टूट के ऑक्सीजन बना देता है. बोले आपको बात समझ आ रही है? सर. Yes, sir. पूछे. सर. हाँ बोले. Sir, but for zinc, why won't it be zinc oxide? I think zinc hydroxide. बेटा इनिशियली जिंक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म because you heat. Steam has energy, so zinc hydroxide break into zinc oxide and hydrogen gas. क्योंकि आपने गर्म स्टीम लिया, स्टीम इतनी गर्म होती है कि जिंक हाइड्रोक्साइड टूट जाता है. Okay, sir. नेक्स्ट इज reaction with acids. So reaction with acid. कौन सा एसिड के साथ करने का बोला है इसने? डाइल्यूट एसिड. So metal reacts with dilute. Dilute means more water. Dilute acid such as
HCl. Look at the example. This is iron. This is HCl. So this hydrogen atom in the acid is replaced by metal. So iron is replaced by hydrogen. So hydrogen gas is released. Sir, I have a question. Yes, yes. Sir, in the reaction with water, do all transition metals react with steam? Some transition metal and beryllium, magnesium, and sometimes calcium. So they react with steam and form oxide Okay, sir. because they need a lot, because they are very stable against the water. So that's why we use the steam. Okay, sir. So next point is hydrogen atom in the acid is replaced by the metal to produce salt and hydrogen gas. Metal plus acid gives salt and hydrogen gas. Look at another example. Zinc plus HCl. Zinc chloride is formed plus hydrogen. So iron is solid, HCl is aqueous, iron chloride is aqueous, and hydrogen is gas. Hydrogen is gas, zinc chloride is aqueous, HCl is aqueous, zinc is solid. बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर. Next is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, all are solid. When these metals react with HCl, KCl is formed. Plus hydrogen gas. Again HCl
NaCl is formed along with hydrogen. So 2 hydrogen, 2 hydrogen. So 2, 2. Now potassium is 2, sodium is 2. HCl aqueous, HCl aqueous, KCl aqueous, NaCl is aqueous. Hydrogen is gas, hydrogen is gas. Next is HCl, HCl, HCl. CaCl2, MgCl2, AlCl3. All produce hydrogen. All produce hydrogen. So 2 hydrogen means 2 hydrogen, 2 chlorine. Equation is balanced. Next is calcium. All are aqueous. Hydrogen is gas. So for calcium, 2HCl, calcium chloride, hydrogen gas. For magnesium, magnesium solid, 2HCl, magnesium chloride aqueous and H2. For aluminium, 2 aluminium reacts with 6HCl and produce 2 AlCl3 along with 3 hydrogen. क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आपने बताना है ये लेड है HCl, कॉपर सॉलिड है HCl, ये सिल्वर है HCl, ये गोल्ड है HCl. बताएं क्या बनेगा पहले वाले में? Lead chloride. बताएं. और सेकंड में? Copper chloride. Copper chloride. शाबाश. और थर्ड में? Silver chloride. Silver chloride. क्या बात है, क्या बात है. और लास्ट में? Gold chloride. Gold chloride. आप लोग माशाल्लाह बहुत सही हैं. वेरी गुड. नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. बताएं क्यों? Reactivity सीरीज की वजह से. रिएक्टिविटी सीरीज की वजह से. शाबाश. बता सकते हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है या लेड की? Hydrogen. तो हाइड्रोजन की ज्यादा रिएक्टिविटी है बिकॉज दे डू नॉट गिव रिएक्शन, बिकॉज lead is less reactive than HCl. Why no reaction with copper? बोले? Sir, because Because it's reactive than HCl. Exactly. No reaction with copper, no reaction with silver, no reaction with gold, because
less reactive than HCl. Less reactive than HCl. ये भी नहीं रिएक्ट करेगा because less reactive than HCl. Less reactive than HCl. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बाकी बाकी सारे के सारे बाकी सारे के सारे रिएक्ट कर जाएंगे. तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए. Okay, sir. तो मैं आपको लिखवा देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज. बोले रिएक्टिविटी सीरीज हम बात करने जा रहे हैं. रिएक्टिविटी सीरीज आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं. आपको याद करना पड़ेगा ये लफ्ज पिस्क, माँ, जिल, आई. फिर आपने याद करना पड़ेगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो भाई पी से है पिस्क, पी से है पोटाशियम, एस से है सोडियम, सी से है कैल्शियम, एम से है मैग्नीशियम, ए से है एल्युमिनियम, जेड से है जिंक, एल से है लेड, सॉरी आई, आई से है आयरन, एल से है लेड, से हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको जल्दी से याद करके सुनाइए. मैं इसको हटाने वाला हूँ. हाँ, पिस्मा जिल हाई, पिस्मा जिल हाई एंड देन कॉपर. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. याद हो गया? Yes, sir. तो बताइए. देखिए हाइड्रोजन कहाँ है? ये रहा हाइड्रोजन. तो ये सारे के सारे ऊपर हैं. तो इसका मतलब ये हुआ ये मोस्ट रिएक्टिव है. ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये लीस्ट रिएक्टिव है. बताइए अम्मी जब गोल्ड की चूड़ियों से पानी में डालती हैं तो क्या गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है?
बोले जब अम्मी मेटल की चूड़ियां होती हैं उससे कोई काम करती है तो क्या वो मेटल डिसॉल्व हो जाता है? बोले No. तो इसका मतलब है वो स्टेबल हुआ। लेकिन अगर सोडियम को पानी में डालेंगे वो फौरन रिएक्ट करता है। बोले मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। So reaction with oxygen. बताइए गोल्ड, प्लैटिनम, बोले क्या बनेगा? Sir, no reaction नो रिएक्शन। वेरी गुड। व्हाई? because they are unreactive. Because they are least reactive, or you can say that unreactive, right? They are very, very unreactive metals. So because gold and platinum are unreactive metal. चलिए अगली बात है ग्रुप वन मेटल। Group 1 metals. For example, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium react easily with oxygen and form oxide. Lithium oxide. So right here 2, right here 4. Sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide. So all are metals, all are solids. All metals are solid. Oxygen is gas. And all are solid. So they react easily with oxygen. Sir, why doesn't platinum come in the reactivity series? Sorry? Sir, why doesn't platinum come in the reactivity series? After the gold, you have platinum. After the gold, you have platinum. Okay, sir.
Copper also react. Iron also react. Copper plus oxygen, copper oxide. This is called oxide layer. Let's suppose this is gold. This is copper. So surface is oxidized. This is oxide layer. This is copper oxide and this is copper. This is called oxide layer. Metal oxide layer is formed. Any question? Sir, so oxygen, only the group 1 metals can react. Sorry? Sir, why did you write like group 1 metals with oxygen? You can also write with the group 2. You can also write same for the group 2. Okay, sir. So next is, so we have done with all these. So 9.1 is completed. Now, uses of metal. Now, uses of metals. Now, uses of metal. Uses of metal. Yes, tell me the some uses of metal. Sir, for wires. Sorry, can you tell me the uses of some metals? Sir, to make wire. Okay, to make wire. Then, Sir, बोले और gold क्या कर and सकते हैं? gold and silver can be used for jewelry, For jewelry, very good. Then, for utensils, for utensils. Okay. for construction So, purposes. very good. So, look at the uses of some metals, right? Hmm. For example, first is uses of
Uses of aluminium. Yes, what are the uses of aluminium? The utensils. Aluminium utensils. Yes, sir. Why? Uses. Yes, first use. Good conductor. Good conductor of heat. So used to make saucepan. Yes, more use. Sir, airplane body parts. Hmm, aeroplane. Body parts. Why? Because the aluminium is less denser, low density. बेटे और बताएं. Foils. Hmm, ठीक है. To make cables, wire. Low density, good conductor. Low density and good conductor. नंबर 4. आपने कोल्ड ड्रिंक की केन पर पी होगी. तो फूड केन्स जो होते हैं उसमें भी एल्युमिनियम होता है क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है. Resistant to corrosion. और बताएं. Sir, coins. एल्युमिनियम कॉइन्स. ओके. और बताएं इसके अलावा. Toys. टॉयस बनाने के काम आता है. अच्छा. और बताएं. Pipes. पाइप्स बनाने का काम आता है, विंडो बनाने का काम आता है, डोर बनाने का काम आता है, रूफ बनाने का काम आता है. बिल्कुल सही है. पर क्यों? बताएं क्यों ऐसा होता है. Because it is malleable and ductile. ये भी सही है. ये भी सही है.
because it's resistant to corrosion. ये ज्यादा अच्छा है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन। तो आपने कहा विंडो फ्रेम, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। चले जी, ये आपने इसको कर लिया। चले, यूजेस ऑफ एल्युमिनियम हो गया। अब आप बताएं यूजेस ऑफ कॉपर। It makes alloys. वेरी गुड, मेक अलॉय, To make wires. टू मेक वायर्स। अब वो जमाना गया, सस्ताई का जमाना था। उस वक्त वायर भी बनते थे, अब तो वायर कॉपर के बेच दिए। तो यहाँ लिखेंगे यूजेस और यहाँ लिखेंगे इसका प्रॉपर्टी। चलिए जी, पहला बताइए। वायर आपने बोला था, वायर। नंबर टू, वाटर पाइप्स। वाटर पाइप्स। वायर क्यों रखा है? गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड malleable, ductile। why water pipe? Resistant to corrosion. Resistant to corrosion, unreactive, unreactive with water, corrosion ही नहीं लगेगा। easily bend, non toxic, बहुत है। क्या हमारी प्रॉपर्टी आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस किस किस के कहते हैं इसने? एल्युमिनियम कहा था, कॉपर कहा था, सभी तो कर लिया। नाउ एलॉयज एंड देयर प्रॉपर्टीज।
Now Sir, can you alloys. go up? Okay. One second. No, to the copper one. Sir, your option is there for the. Sorry. Okay, done, sir. Okay. Now alloys. Yes. What are alloys? Sir, mixture. Mixture of what? The mixture of Two metals or non-metals. Alloy is the mixture of metal and metal or metal and non-metals. Alloy is the mixture of two metals or mixture of metal and a non-metal and non-metals. For example, Sir, steel. exactly metal plus metal is steel or alloy. Steel is metal plus non-metal, right? For example, copper 70%, zinc 30%. This is called brass. Brass. Similarly, metal plus non-metal is equal to alloy. For example, iron plus carbon, steel. So next point, pure metals are soft. Pure metals are soft. And they may corrode easily. यानी मेटल इतने नरम होते, जो प्योर गोल्ड होता है ना, प्योर गोल्ड, उसकी तो ज्वेलरी भी नहीं बन सकती है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? yes, Yes, sir. Sir, sir. what are metals like hard? So we mix, so we make alloy by adding new substance in it, new metal in it. Pure metal is soft because of regular
arrangement of atoms in the metal lattice. Atoms are arranged in neat layers. So slide each other. Slide on each other easily. That's why they are soft. When force is applied on it. आपको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. चले यहीं तक ही करते हैं इंशाल्लाह, फिर अगली क्लास में जो है इसकी शेप वेप करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज, टेक केयर. Thank you, sir.